distribution movement. आ जाओ, हम लोग को याद भी है कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन? एनीवन? You can make a note of that. A distribution in which correct, Savio, very good, bro. Mean is equal to a median. Median is equal to more. Distribution in which mean is equal to median and median is equal to more, then that type of distribution is called as symmetric distribution. So write down the heading as mean 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 and variance for a binomial distribution. Mean and mean and variance for a binomial distribution. So next time, you can write down for a binomial distribution. For a binomial distribution with n and p to be as a parameter. The binomial distribution with n and p to be as a parameter. The binomial distribution with n and p to be as a parameter. H H mean and variance. H mean and variance is defined to be as its mean and variance is defined to be as mean is equal to n into p. Mean is equal to n into p.
and variance is equal to NP given. Variance is equal to NP given. And third one, standard deviation is equal to root of NP given. By using the relation, standard deviation, standard deviation is the positive square root of the variance. And now, starting with some simple questions. So, for finding the mean, variance, and the standard deviation, what kind of information do you expect from the question? What kind of information do you expect from the question? Anyone? Okay, no one? Yes. Either you can expect the value of n and p, or you can expect the value of n and q. तीनों वैल्यूज कभी भी एक साथ नहीं दिए थे और हम लोग को जरूरत भी नहीं है, हम लोग को पता होना चाहिए कि सब में अगर p दिया है तो बोलो इजीली कौन मिल जाएगा, q, और अगर सब में q दिया है तो क्या मिल जाएगा करेक्ट, वेरी गुड. So by knowing the values of n, p and q, तुम लोग आराम से मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड कर सकते हो. ये देखो, सब में मीन एंड वेरिएंस दिया हुआ है एंड द क्वेश्चन इज to find the value of the parameters. Question is to find n and to find p. सब में मीन वेरिएंस दिया हुआ है. एनीवन? जल्दी, टाइम वेस्ट मत करो. आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता तो ना बोलो. कैन यू सॉल्व दिस? नो? ये देखो, मैं बताता हूँ. अगर तुम लोग को सब में मीन दिया हुआ है, ये देखो, np इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया होगा. नंबर दिस एज 1, वेरिएंस दिया है. इसका मतलब
एनपी क्यू इज इक्वल टू समथिंग कुछ दिया होगा बराबर है। उसके बाद बड़ा वेरी गुड पार्थ। अब तुम्हारे पास बड़ा यहाँ पे अलग अलग बड़ा ऑप्शन है। ये देखो तुम्हारे पास सब में एनपी का वैल्यू बड़ा दिया हुआ है, तो क्यों ना बड़ा यही एनपी का वैल्यू ये देखो इक्वेशन नंबर 2 में जाके बड़ा सब्स्टिट्यूट कर दे। बराबर है, तो आराम से बड़ा ये देख क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। बराबर। अच्छा क्यू मिला तो बड़ा कौन मिल जाएगा? पी। फिर यही बड़ा पी का जो वैल्यू है हम लोग बड़ा इक्वेशन नंबर बड़ा 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसमें से बड़ा हमें कौन मिल जाएगा? चलो समझा बड़ा सबको। ये हुआ फर्स्ट मेथड बड़ा सब्स्टिट्यूट। अब ये देखो दूसरा मेथड। डिवाइडिंग बड़ा इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। एनपी क्यू को जब तुम लोग बड़ा एनपी से डिवाइड करोगे तो जो टर्म्स है बड़ा एन पी कैंसिल हो जाएगा बड़ा। और तुम लोग को बड़ा यहाँ पे मिल जाएगा कौन सा वैल्यू बड़ा? क्यू का वैल्यू। और उसके बाद अगेन द प्रोसीजर विल बी द सेम। फिर उसके बाद कहीं पे नोट करके लिख लो एज अ नोट यू राइट नंबर relation relation between mean variance mean variance and standard deviation mean variance and a standard deviation for a binomial distribution for a binomial distribution okay, okay. For a binomial distribution binomial distribution mean is greater than variance and variance is greater than standard deviation. Mean is greater than variance and variance is greater than standard deviation. तो इसका मतलब बड़ा ये हुआ कि फॉर अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताओ बड़ा सबसे बड़ा कौन? मीन छोटू कौन?
standard deviation bro. And who comes in between bro? So very good. बट ये सिर्फ बड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एप्लीकेबल होता है और कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होता है। अच्छा, अब बड़ा प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है बड़ा वो तो कंप्लीट मैंने कर दिया था। हाँ, अभी थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे एक टाइमिंग बड़ा आज के लिए स्टॉप करते हैं। सुनो, लेक्चर खत्म नहीं होगा, बट प्रोबेबिलिटी में बड़ा एक इंपॉर्टेंट टर्म जो डिस्कस करना बाकी रह गया था बड़ा, वो ये है बड़ा द टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये तुम लोग बड़ा लास्ट पेज पे कहीं पे नोट कर लो बड़ा, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। टाइप्स probability. So you can make a note of that. Right on. Probability is classified is classified in two types. Probability is classified in two types. Classified in two types, or it is being classified into two broad divisions. And, and they are they are number one, which is been called to be as objective probability. Number four, which is called to be as objective probability. हो सकता है बड़ा कि इंस्टीट्यूट तुम लोग को ऐसे टाइप के बड़ा क्वेश्चंस पूछ सके। द टू ब्रॉड डिविजन्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आर, तो योर आंसर शुड बी बड़ा नंबर वन इज अ सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड नंबर टू इज बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनो बड़ा, जस्ट बाय नोइंग द नेम्स द पर्पस इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्व्ड। पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। So what is the subjective probability? You can write down. You can write down. So what is the subjective probability? Write down. The probability. The probability which is based upon probability which is based upon personal experience. The probability which is based upon
the personal experience and and the personal judgment, personal experience and the personal judgment is called to be as subjective probability. Subjective probability, it is used in management. It is used in management and and plays a plays a important role, and plays an important role in the part of decision making. In the part of decision making, ये हुआ बड़ा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब मुझे ये बताओ बड़ा कि क्रिकेट बड़ा मैच देखने के टाइम बड़ा हम लोग कितनी बार बड़ा ऐसे गैस करते हैं कि इंडिया बड़ा जीतेगा या फिर इंडिया हार जाएगा, बड़ा करते कि नहीं करते बड़ा? फटाफट आंसर दो बड़ा, फटाफट। अब बड़ा वो यस वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए बड़ा या फिर वो चांस बड़ा बताने के लिए क्या तुम लोग बड़ा वहां पे कोई फॉर्मूला यूज करते हो, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, या फिर तुम लोग बेटा कोई फॉर्मूला यूज करते हो, पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे बेटा तुम लोग क्या यूज करते हो, अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस या तो फिर अपना जजमेंट बेटा यूज करते हो ना बेटा यहाँ पे, और वो पर्सनल एक्सपीरियंस या जजमेंट यूज करके बेटा तुम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो। तो दैट इज बेटा कॉल्ड टू बी एज बेटा सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। समझ में आया सपोर्ट? एंड फिर उसके बाद आता है बेटा नंबर 2 which is being called to be as objective probability। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और उसमें बेटा तुम लोग कहीं पे नोट कर सकते हो कि द प्रोबेबिलिटी which is based upon the probability which is based upon mathematical laws form of mathematical definitions or mathematical formulas is called to be as objective probability। फुल स्टॉप और उसमें कंटिन्यू करूंगा। इन अदर वर्ड्स the chapter which we have studied, in other words the chapter which we have studied is called to be as is called to be as ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। तो जो लास्ट चैप्टर हम लोग ने जो कंप्लीट किया ना बड़ा प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज बेस्ड अपॉन बड़ा ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अच्छा बड़ा आज का जो असाइनमेंट है होमवर्क, ये जो मैंने फॉर्मूला तुम लोग को पढ़ाया था ना बड़ा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बड़ा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक्सेस एंड फिर द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बड़ा मीन वेरिएंस एंड
standard deviation बड़ा, all these formulas बड़ा please write down 3 times बड़ा, learn कर लेना बड़ा, next lecture में sums start होगे बड़ा इसके ऊपर sums directly, and जिसको बड़ा formulas नहीं आते होगे बड़ा वो student sum solve नहीं कर पाएगा, तो सब लोग बड़ा please मैं request कर रहा हूँ बड़ा सब लोग को write the formulas बड़ा 3 times and learn that formula. So we'll stop here. Bye all of you. Take care.